Good afternoon, friends. Today we'll begin with where we left. So let's start with fundamental duties. So what do we understand by fundamental duties? So fundamental duties are the expectations of the constitution makers or the government from the citizens to fulfill some of the duties. These are not obligatory nor they can be enforced by the courts. It is up to an individual discretion to follow them or not, and it is kind of a moral responsibility of the citizen to follow these duties. So we see that here are some of the duties that have been listed here, and we'll go read it one by one. So the first duty is to abide by the constitution and its ideal, national flag and national anthem, and the other is to cherish and follow the noble ideals which inspired our freedom, national struggle for freedom. And third is to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Fourth is to defend the country and render national service when called upon to do so. Fifth is to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities, and also to denounce practices derogatory to the dignity of women. The next is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. The other is to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. The other is to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, to have compassion for living creatures. 9. To safeguard public property and abjure violence. 10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. And the last one, to provide opportunities for education of children ward age of 6 and 14 years. Okay, so these are some of the duties, and you should know that where all it encompasses. It encompasses related to some of the objectives of the nation, towards our surrounding, towards our duty towards our environment, towards women, towards our culture, and to develop some scientific temperament. So all these things are included in the fundamental duties. Now next we come up is regarding the fundamental duties, and we'll see that a brief of how it was being introduced. So it is inspired from the Soviet Union of Russia, which is now Russia. It was earlier than it was Soviet Union, and it was recommended by a Sorensen committee, and it was added through 42nd Constitution Amendment Act 1976. It is also said as to be the mini constitution of India. It is mentioned in part 4A of the Constitution under Article 51A, and total number is 11. Now the next is regarding president. So we'll start we are just going one by one in the serial manner as given in the constitution. So now after fundamental duties comes the president. We'll start with the union executives, in which the first one is the president. And for president, who is the president? He is the first citizen of the country, and article number 52 to 62 discusses various provisions related to president, like how he is appointed, how he can be impeached, and what are his functions. So all we'll look into फ्रॉम 52 to 62. सो यहाँ से देखते हैं, नीचे 52 है, आर्टिकल 52. तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फिर आर्टिकल 53 बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज टू बी वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट. देन आर्टिकल 54 says that the president shall be elected by the electoral college. And article 55 says about the manner of election of president. Article 56, it tells about the term of office of president, 5 years from the date on which he enters his office. Article 56. Article 57, it is eligibility for re-election of a person to the office of president. Article 58, qualification for election as president. Article 59, condition of president office. Article 60, oath and affirmation by the president. Article 61, procedure for the impeachment of the president. And the last, article 62, it is about time of holding election to fill vacancy in the office of president. So these are the articles related to president. You should remember कि 52 से 62 कहा गया है और कैसे कैसे बढ़ा है. तो हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट होना चाहिए और सारी एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं पे है. इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं. इनका मैनर ऑफ इलेक्शन प्रॉपरली गिवन है. फिर टर्म ऑफ ऑफिस
इनका 5 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन है, ये कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। देन कम्स द क्वालिफिकेशंस that he has to meet and the condition of the president office, then oath, and then the procedure for his impeachment, and lastly if there is any vacancy then how the office will continue. Now coming to the election of the president. Okay, so election of the president as given in article 54 कंप्राइज की एक इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के लिए, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ, और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होते हैं, जहाँ पे है लेजिस्लेटिव असेंबली सच एज स्टेट्स और यूटीज़, जिनमें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। मतलब ये 3 यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस वजह से ये तीनों भी ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। एंड नाउ द मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट होता है। ओके, इट इज़ थ्रू सीक्रेट बैलेट। नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। See, the qualification for the office of president are: he must be qualified to be elected a member of the Lok Sabha. Then he should not be holding any office of profit in central and state and local. तीनों जगह एक कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको होल्ड नहीं करना चाहिए। Then other is he should be a citizen of India. The next is he must have completed 35 years of age. Okay, so these are his qualifications. Okay, and what is the age for the uh, I have objection related to this. Must have completed 35 years of age. I don't think so it is true, because this let me check. Minimum age for president. $35 years for age. It should be 35 years of age. And for PM it is 25 years. If he is a member of Lok Sabha, or 30 year if he is a member of Rajya Sabha. तो अच्छा, मुझे यही याद आ रहा था कि 25 साल होता है मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए और 30 इयर्स राज्यसभा के लिए, तो हाउ कम ही शुड बी मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो फिर लेट अस सी व्हाट हैपेंस। नाउ द नेक्स्ट इज नॉमिनेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सी, देयर इज we saw the qualification. Now someone can nominate themselves or others can nominate them for the post of president. So the number of proposers and seconders of the candidate, if you look at, if there should be at least 50 electors ना, member of parliament या MLA 50 electors होंगे इनके में, प्रपोजर और सेकेंडर के लिए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का चाहिए होगा। और फिर अगर 1/6 से कम अगर इनको वोट मिलते हैं तो इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 15,000 की वापस नहीं की जाएगी। सो दैट इज़ द केस। और इंडिया में ये देखा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो एक पॉलिटिकल इलेक्शन बन जाता है, क्योंकि वो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। तो द बिगर पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम द पार्टी कैंडिडेट्स, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ पॉलिटिकल। नाउ कमिंग टू वैकेंसी। वैकेंसी कब आ सकती है? देखिए, वैकेंसी और एब्सेंटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैकेंसी जो है टेम्पररी है, और एब्सेंस है कि नाउ देयर हैज़ टू बी एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल द पोजीशन। तो वैकेंसी किस वजह से आ जा सकती है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, व्हेन द इलेक्शन इज़ डिक्लेयर इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया तब भी वैकेंसी आ सकती है। ऑन हिज डेथ, इफ़ ही इज़ डेड, ऑन रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, इफ़ ही इज़ इम्पीच फ्रॉम हिज ऑफिस, तब वैकेंसी आ सकती है। नाउ विल सी कि इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज़ किया गया है, और आर्टिकल 61 में इसका मेंशन है, और इसका सिर्फ एक कारण दिया गया है कि वाई ही शुड बी इम्पीच्ड। ही शुड बी इम्पीच्ड ओनली ऑन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है सिर्फ इसी रीज़न पे उनको इम्पीच किया जाएगा। एंड एटलीस्ट 14 days प्रायर नोटिस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता भी है तो 14 days पहले प्रेसिडेंट को बताना होगा। ओके, नाउ सिग्नेचर ऑन नोटिस एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस कंसर्न, और ऐसे किसी नोटिस पे 1/4 ऑफ द मेंबर्स शुड साइन and it is can be presented in any house, and it should be passed by both houses of parliament separately by a majority of not less than 2/3 of the total members of the body. Okay, so 2/3 of the total strength of respective houses. Okay, that is the condition. So till now it is also called a dead letter because it has not been made use in our constitution or in our polity till now. Now we'll see some of the powers of the president. He has been bestowed with a diverse profile, having powers such as executive powers, legislative powers, judicial powers, and emergency powers. What is executive powers? That he can implement something, or he has the authority to act. So in that case, the executive power of the union is vested in president. He is the one who signs every official document. So he is executive head. Now all executive action of the government shall be expressed to be taken in name of president. इनके नाम पे ही सारे executive action लिए जाते हैं। 77 में इसका mention है। All appointment made by president except the appointment of judges. सारे अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, अपॉइंट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस के लिए हो गए, या फिर कंसर्निंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एट टाइम्स ऑल्सो। डिक्लेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग शेड्यूल एरियाज में इनको काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी मिले हैं, सो दैट इज़ अंडर हिम। Now coming next to the legislative powers that have been given to him. So some of the legislative powers are summoning, prorogation and dissolution of parliament article. Okay, so he can summon, prorogate and dissolve the parliament, and this has been given under article 85. He has to give a special address in the parliament at the first session of the year, or when the new parliament is set up, then in the first session he has to give a special address. And in case of joint sitting of both the houses, he can also summon such meetings, such sittings, and he is the final authority to give assent to bills, and after he signs, the bill becomes an act. It has been given in article 111. Then he promulgate ordinances can be passed through him, if there any house of the parliament is not in session, that he may pass an ordinance. It is given in article 123. So we see that article 85, 87, 108, 111, 123. So these are his legislative powers. Now coming to judicial powers. Some of the judicial powers that has been given to him are, he is the one who appoints the judges of Supreme Court and High Court. He's been given the pardoning power under article 72. Even after the judgment has been given, the accused or the one who has to face the judgment may appeal to president, and it is upon his discretion. Then power to consult Supreme Court. He can under article 143 ask for suggestions or anything related to various decisions, to consult Supreme Court under article 143. And in this case, it is not necessary that he has to accept that advice, and also it is not necessary for Supreme Court to compulsorily give an advice. Now coming to the emergency powers. So he has been given with emergency powers as well, such as the national emergency, article 352, president's rule, article 356 and 365, financial emergency, article 360. So that's it. Now coming to his financial powers and other powers. So coming to his financial powers, let me see which page. Okay, just we are halfway through this PDF. We'll complete it. Then comes the financial powers. So financial powers, see, he is the one who, if money bill is introduced in the parliament, his prior recommendation is necessary under article 110. And then president causes union budget to be laid before the parliament under article 112. Expenditure from the contingency fund only with his prior permission under article 267. And then finance commission could be set up by him under article 280. And then other powers that have been given to him are international treaties and agreements are concluded in the name of the president.
He is the supreme commander of the Indian Army, India's representative in international forums and affairs, and sending and receiving ambassador and high commissioners. So these are his powers, and if we look at this table, it has been given like how many presidents we have till now, and the current president is Mrs. Draupadi Murmu, whose name is not, I don't think so it is updated. So Ramnath Kovind is given in it the latest. Now we see the pardoning powers that are with the president. So there are 5 options. Like if someone, even after the Supreme Court has given a judgment, or the final judgment has been given, then he may appeal to the president, and he may or may not react to that. So he has 5 options. If he reacts, so he can remit the punishment that has been given. A remission is he can reduce the period of punishment. Suppose he's been given 10 years, so he may reduce it to 5 years. So that kind of remission. Then he may commute, reduce by changing the nature of punishment. Suppose he has been given harsh punishment for 10 years, so he's not changing the years for 10 years only, but it may be softened. Okay, not harsh punishment. Then pardon, completely free from punishment, है ना, ही पार्डन माफ़ कर दिया पूरा, उसकी सारी जितनी पनिशमेंट मिली थी सारा माफ़ कर दिया. देन कम रिस्पाइट. रिस्पाइट मतलब हो गया क्या, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट, स्पेशली द डेथ पेनल्टी है. मतलब पनिशमेंट एज इट इज़ है, बट अभी सस्पेंड, टेम्परेरी सस्पेंशन है कुछ टाइम के लिए, कि after few days or few months, then he that may be applicable. Then reprieve is reduction in punishment in special circumstances. Suppose a lady has been given punishment, and if she is pregnant, or there is some special condition with her, then her term may be reduced. So that is under reprieve. Now coming to the veto powers of the president. What are the veto powers that have been given to the president? So it is a suspensive veto, absolute veto and pocket veto. तो जब एक एक्ट बिल उनके पास आता है असेंट के लिए कि सर आप साइन कर दीजिए, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं. पहला है एब्सोल्यूट वीटो, कि reserve opinion on the bill, I'm not sure about it. सी सस्पेंटिव पता है, ये पता है. एब्सोल्यूट आई थिंक, सी एसेंट भी तो एक ऑप्शन है विच हैज़ नॉट बीन गिवन. एसेंट दे, या तो फिर एब्सोल्यूट मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब हो गया कि he did not sign or he rejected the bill as it is. लेकिन देखा जाए तो प्रेसिडेंट इस वीटो का इस्तेमाल नहीं करता है मोस्टली, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का व्यू रहता है उसी के बेसिस पे वो साइन करते हैं. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है उसी के बेसिस पे वो साइन करते हैं. So there is a very little chance that he may use this veto. And pocket veto is not taking any decision, and since there is no time limit as to when he has to act, so it could be an indefinite time for which he keeps that bill with him. Then suspensive veto is that he may be unsatisfied with some of the provisions that are given in that bill, so he may send it back to the parliament for reconsideration, and when after reconsideration it comes back to him, then he has to compulsorily sign it. So these are some of the veto powers of the president, and some of the important facts that have been given are the commander-in-chief of the 3 armies of India is the president. There is a constitutional right to declare a geographical area as a scheduled area by the president. Okay, president is the one who declare a scheduled area. You should remember it. And in which schedule does a scheduled area कैसे declare करते हैं? जहाँ पे एक significant population हो tribes की किसी state में, और उनकी कंडीशन उतनी सही नहीं है, तो president has the discretion to declare any such area. Then the president of India can submit his resignation to, किससे सबमिट करेंगे president? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. The elected members of Delhi, Puducherry legislative assemblies were included in president's electoral college by Act of 70th Constitutional Amendment 1992. Where there is a vacancy of the office of the president, it should be filled within 6 months from the date of vacancy. The one who will take over the office vacant ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, मतलब टेम्परेरी अगर वो मतलब एब्सेंस में उनके अगर टेम्परेरी वैकेंसी क्रिएट हुई है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे. ओके, अदरवाइज
the elections have to be done within 6 months. Now some examination. Till now, the only Chief Justice of the country to hold office of President is Justice Muhammad Hidayatullah, 1969. And then money bill is introduced in Lok Sabha by the prior recommendation of President. The President has right to receive information from the Prime Minister under Article 78 of the Constitution. The only President of the country is to be elected unopposed is Neelam Sanjeeva Reddy. Impeachment proceedings are Kasi judicial process. Executive Chairman of India, President. Then Attorney General, Advocate General and CAG. Okay, so we'll see Attorney General, Advocate General and CAG. These are also the constitutional post. And जैसे कि अटॉर्नी जनरल की बात करें, ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर एंड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट. एंड देन कैग इज द चीफ ऑडिट I am not able to remember. She was कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो हम इनको एक बाय एक देखेंगे. तो देखिए, चलिए अटॉर्नी जनरल से शुरू करेंगे. ये कौन है? सुप्रीम लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जैसे जज की क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही इनकी भी सिमिलरिटी होनी चाहिए. और इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये राइट टू बी प्रेजेंट एंड टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, उनकी मौजूदगी हो सकती है, वो बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते वहाँ पे वो बैठ के. Okay, so now we'll see tenure during the pleasure of the president. As per the president, he may be there. The salary not fixed in the constitution, determined by the president. Related article 76. Okay, article 76 talks about the attorney general. Now I don't think so this is very important. आप recent देख लीजिए कि 15th कमीशन कैन के सिंह हुए हैं, और अभी रिसेंट भी कंस्टिट्यूट की गई थी जो 16th कमीशन. उनके फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं अरुण पनगड़िया, वो बन चुके हैं अभी फाइनेंस कमीशन के. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार. फर्स्ट लॉ ऑफिसर, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल. Holds office during pleasure of president. Not being a member of either house of parliament, he can take part in proceedings of the house but cannot wait. Attorney general. Then the one is the first legal advisor to the state government. के लिए कौन रहेगा? यही काम एडवोकेट जनरल. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आर्टिकल 148 के में आएंगे. फिर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय द मैनर ऑन विच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड by special majority of both the houses of parliament. The audit report of the CAG is examined by public accounts committee. ये ध्यान रखिएगा, PSC जो है CAG की रिपोर्ट को ऑडिट करती है. The CAG was separated from accounting. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन ये ऑडिटिंग का काम नहीं करते हैं, वो 1976 में इनका काम सेपरेट कर दिया गया था. फिर एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए यही काम करेंगे. ये आर्टिकल 165 में इनका मेंशन है. स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने देखा, इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे. क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट. सैलरी डिटरमाइंड बाय गवर्नर एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर. इनका टेन्योर. फिर हम कैग पे आते हैं. कैग का मेंशन है आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक. Then he is appointed by president. His salary is equal to the Supreme Court judge, and tenure is given in the constitution, 6 years or 65 years, whichever is earlier. Functions for central government or state government. For central government वो बस auditing करेंगे. For state government accounting भी करेंगे और auditing भी करेंगे. और ये अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को. और गवर्नर को भी करेंगे. अगर स्टेट का करेंगे तो गवर्नर को करेंगे, और सेंटर का करेंगे तो प्रेसिडेंट को करेंगे. करेक्ट. अब हम आते हैं कि अदर, अब आगे हम और कुछ मिसलेनियस ऐसे देखते चलेंगे चीज़ें. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 आर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव राज्यसभा और लोकसभा से चलता है. एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया. और जुडिशरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार कि पंचायती राज कमेटीज जो फॉर्म हुई हैं और कौन सी कमेटी थी, उसके क्या रिकमेंडेशन थे, किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए रिकमेंड किया था. तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा. इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखिए सबकी, इनका सीक्वेंस क्या था.
देखिए, पहले थे बलवंत राय मेहता कमेटी आई, फिर अशोक मेहता कमेटी आई, फिर जीवीके राव कमेटी आई, एलएम सिंघवी, देन थंगन। ईयर देखते हैं, बलवंत राय 1957, फिर इनके 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी आई, फिर इनके लगातार ही फिर आने लगा। देखिए 85 में ये, 86 में ये, 88 में ये। तो आप देख लीजिए अशोक मेहता के बाद जीवीके राव, सिंघवी और थंगन कमेटी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नाउ स्टेट्स विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिया में कितने स्टेट्स के सिर्फ असेंबली भी है और काउंसिल भी है? तो आंध्र प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पहले देखते हैं। He should be a citizen, must have completed 35 years of age, qualified for election as a member of राज्य सभा। सैलरी इनकी कितनी है? 4 लाख रुपीज़ पर मंथ एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनकी जो सैलरी मिलती है, नॉट एज द वाइस प्रेसिडेंट बट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन ही इज इलेक्टेड बाय elected as well as nominated member of the houses of the parliament। दोनों हाउस के ना सिर्फ केवल इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इनके लिए वोट करते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, इनका भी यही सेम प्रोसीजर मैनर है। द टर्म ऑफ ऑफिस क्या है इनका? 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट जब वो ऑफिस में आते हैं। देन इनकी वैकेंसी किस वजह से हो सकती है? डेथ की वजह से, वॉलंटरी वो रिज़ाइन कर सकते हैं, और इनका रिमूवल कर दिया जाए अगर तब। तो इनका जो रिमूवल होता है, एक रेजोल्यूशन जो कि राज्यसभा मेंबर्स ही ला सकते हैं, और राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ थी, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ही इज़ नॉट इम्पीच्ड, ही इज़ रिमूव्ड, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए इसमें नाम लिखे हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट के। तो लेटेस्ट वन इसमें वेंकैया नायडू है, बट हम जानते हैं अभी हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं सर मिस्टर जगदीप धनखड़। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बाकी के चैप्टर्स। द वन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओथ इनको प्रेसिडेंट या कोई उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ करेगा। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन लाइन्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। In the official order, the office of vice president comes after president. There shall be a vice president of India mentioned under Article 63. The ex officio chairman of the Rajya Sabha is vice president of India. He who is empowered to discharge the function of the president during vacancy, he is the vice president. So we have done the fundamental duties. Then we came to the president. We covered him. Then advocate general, attorney general, and computer and SCAG, and then we've completed vice president. In the next lecture we'll do Union Council of Ministers. Thank you everyone.